नमस्कार। सर्वप्रथम आज के सुअवसर की प्रेरणा देने वाले परमपिता परमेश्वर के चरणों में वंदन करती हूँ और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम की श्रृंखला में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज ई इनॉग्रेशन हाई स्पीड ट्रैक का नेट्रिक्स इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री अरुण गोयल जी को, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय श्री अरुण गोयल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे स्वागत भाषण और कार्यक्रम की प्रस्तावना यहाँ प्रस्तुत करें। जी, केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग विभाग श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग विभाग श्री राजवर्धन सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर रघुपति सिंघानिया जी, डॉक्टर पवन गोयनका जी और सभी उपस्थित महानुभाव, नमस्कार। It's my great pleasure to welcome you all to inauguration of the high-speed track at National Automotive Test Tracks, NATTRACS, at Indore. As most of you may be knowing, NATTRACS was set up as a new greenfield center under NATRIP, that is National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project, launched by the Government of India to fulfill homologation and certification, research and development of the Indian auto sector. Under NATRIP, which had an overall funding of approximately 3,700 crores, NATTRACS Indore has the largest funding of 1,321 crores. GRC Chennai had a funding of 963 crores, and ICAT Manesar had a funding of 941 crores. All these centers have world-class test facilities for powertrain, electromagnetic interference and electromagnetic compatibility, electrical and electronics, advanced passive safety, component certification, computer-aided design and computer-aided engineering, fatigue, tire testing, and test tracks for homologation purpose. NATTRACS Indore is also the center of excellence for vehicle dynamics. NATTRACS has now Asia's largest and world's fifth largest proving ground, that's high-speed track, with a peripheral length of 11.3 kilometers in 4 lanes. This high-speed track shall carry out development and homologation tests for all kinds of vehicles, including maximum speed of 375 kilometers with control on steering. The large size of this high-speed NATTRACS enables OEMs to perform a wide variety of tests in one track itself, like max speed, acceleration, coast down, brake performance, constant speed fuel consumption, emission test through real road driving simulation, high-speed handling and stability evaluation, high-speed durability testing. This track shall provide this facility to all vehicles, that is 2 and 3 wheelers, cars, buses, trucks, tractor trailers, etc. This is the only track in country for testing high-end cars with maximum speed capability beyond 300 kilometers per hour. It also has the locational advantage of being in the center of the country. This construction has been as per global standards with evenness of surface at plus minus 3 millimeters
as compared to plus minus 8 millimeters in highways. It obviously has the potential to organize supercar vintage car racings. It shall now be the star attraction of automobile fraternity. Earlier, many of these tests you had to go outside India, but now this facility shall allow export homologation services, both the vehicles and vehicle components for exports to Europe, USA, Gulf, Africa and Southeast Asian countries, which will help in boosting the exports. Simultaneously, it shall also help in reducing accidents by enabling new safety regulations. I use this occasion to convey my heartiest wishes to the team Natrix, other NetTrip centers and to Indian auto industry towards making India a leading automotive hub in the times to come. Jai Hind. धन्यवाद सर। आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती के चरणों में हम नित नई उपलब्धियों से पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसी नवाचार के इस पुष्प में अब मैं दिखाना चाहूंगी, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी एक ऑडियो विजुअल फिल्म जिसमें इस हाई स्पीड ट्रैक की समस्त विशेषताएं और इसकी महत्ता के बारे में वर्णन है। आइए देखते हैं एक ऑडियो विजुअल फिल्म। Test Tracks is one of the important centers under NatTrip and is one of the largest proving grounds in the world, spread across 2,960 acres at Pithampur in Dhar district, Madhya Pradesh, India. NatTracks is a project of Government of India which is set up to support the growing Indian automotive industry. NatTracks offers 14 different types of test tracks supplemented by state-of-the-art test equipment, research and development laboratories and workshops for comprehensive testing evaluation of all types of vehicles ranging from two-wheelers to heavy commercial trucks for vehicle dynamic performance, durability and development testing by the industry. The special tracks are dynamic platform 1.8 kilometers long, braking track with 6 special surfaces for dry and wet tests, handling track of 3.6 kilometers long, fatigue track with 8 different surfaces, Belgium pavé, washboard, potholes and ditches, twist track, comfort track with 19 different surfaces, sustainability track, wet skid pad, two-wheeler handling track and gradient track. It is the culmination of Indian automobile industry's long-awaited aspiration for a truly world-class proving ground. The beauty of NatTracks, 11.3 kilometers long oval-shaped high-speed track, top ranked in Asia and 5th largest in the world. The high-speed track is 16 meters wide with 4 independent lanes. This track is designed for neutral speed up to 250 kilometers per hour and maximum speed up to 375 kilometers per hour on curves, and no limit to maximum speed on straight patch. The 0% longitudinal slope makes this track as open-air test laboratory for precise measurement of automotive performance of vehicles. The banking on curves is of parabolic shape, designed for maximum speed. The parabolic curves were constructed with special machinery to pave and roll on the curves. The straight portion and banking on curves give tremendous potential to test drive for evaluation of performance, drivability and durability of test vehicles. A large number of tests like maximum speed, acceleration, coast down, fuel consumption, high-speed handling and stability tests, and sustained durability at high speed can be performed on this track to their limits safely and effectively. A sports car was recently tested at 308 kilometers per hour on curves. A wide range of vehicles from two-wheelers, three-wheelers, cars of all types, buses, trucks to heaviest tractor trailers,
can be tested on the high-speed track. This track can also be used for commercial events like product launch, supercar racing and dealers events. Most of the world's top manufacturers like Volkswagen, FCA, Peugeot, Renault and Lamborghini have showed their interest to use this facility. The high-speed track at NATRAX is pride of India in world's automobile industry. इस शुभारंभ के अवसर पर अब मैं अनुरोध कर रही हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आदरणीय सर से मैं अनुरोध करती हूं कि वे फलक का अनावरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूं कि इस गौरवशाली क्षण में हम सब साक्षी बने और ट्रैक का लोकार्पण कर इस ट्रैक को आप सभी को समर्पित करें। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर पवन गोयंका जी को, पास्ट प्रेसिडेंट सायाम और फॉर्मर सीईओ महिंद्रा एंड महिंद्रा। डॉक्टर पवन गोयंका जी को मैं आमंत्रित करती हूं अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। Honorable Minister of MHI, Sri Prakash Javadekar ji, Honorable Minister of the State of MHI, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister of Industries from Madhya Pradesh, Sri Datti Gaon ji, Secretary MHI, Sri Arun Goyal ji, Joint Secretary, Dr. Sindhania, and all the other respected dignitaries who are present here today. First of all, I must say that I'm impressed with the way we are now able to manage everything virtually. And COVID has taught us to innovate so that we can not lose a beat and do all our events sitting at home or in offices. And it's a very nice arrangement. Today we are celebrating a very important milestone. That is the inauguration of high-speed track at NATRAX in Indore. अरुण गोयल जी ने सब इसके बारे में बैकग्राउंड दिया है, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ये काम एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री के लिए, जो 2005 में शायद शुरू हुआ था। और मैं शायद आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु इज स्टिल अराउंड in the industry who was present at the time of initial planning for this ambitious project in 2005. And I must say that the kind of investment the government of India has put behind creating this infrastructure for auto industry in India is probably unmatched. For the government to spend 3,500 crores plus to create infrastructure, almost $500 million to create infrastructure for an industry, is really a very major step taken by the government. And on behalf of the industry, I would like to thank the government for doing this, and the industry is very grateful for this step taken by the industry, by the government. Now, India now has, as Mr. Goyal said, all the testing infrastructure that is required for developing modern automobile. The only thing missing, I think, is the wind tunnel. And I would request if one can consider wind tunnel also, that will complete everything.
But leaving that aside, now there is no need for the industry to go out of India, which we used to do till recently for all kinds of testing that was required, which will obviously save a lot of time in development and save a lot of development cost. What we need to do now clearly is to ensure that our test tracks that we have created, which are state of the art, almost as good as anywhere in the world, are fully utilized. And Sri Goyalji is working with the industry and working with NATRIC to see how to manage these test tracks so that the industry fully leverages these and the test tracks are put to full use. I would now like to, having thanked the government of India, just take this unique opportunity that I have today of having the Honorable Minister, the Minister of the State, the Secretary of MHI all together captive to talk a little bit just about the industry. There are 2 or 3 points that I want to make, sir. First of all, India clearly needs to transition to electric vehicles. But I would like to say that in spite of the government of India and the state governments doing quite a bit to facilitate transition to EV industry, it's happening at a very slow pace. And I think there's a need for a consultation that all the stakeholders have to see what should be done by various people to make the EV transition happen much faster. We cannot afford the slow pace at which the transition is happening today. The second thing I want to say, sir, is that auto industry today in India especially is bruised. Even before COVID, the industry was almost stagnant for 5 years. And COVID has obviously taken the sail out of the wind, the wind out of the sail. And again, there is a need for, as it is said, all party meet to kind of put our minds together to see what needs to be done to get the industry back into a growth path. We all know that Indian auto industry is very important for economic growth of the country. And what I would urge you, sir, is that your Ministry of Heavy Industry, had done an automotive mission plan in 2016 for 2026. A lot has changed since then. And I would request the department, with the help of the industry and experts, to revisit that plan and come out with a new plan for 2026 with an aim of doubling the auto industry size, thereby doubling employment, doubling tax revenue, and obviously creating a lot of export for India. So with that request and a request that PLI is announced soon, I once again want to thank the Government of India for providing this absolutely world-class infrastructure to the industry, which will really help the industry in moving forward. And I wish NATRAX all the best in taking this new initiative to the full use of industry. Thank you very much. धन्यवाद सर। अनुभवी विचार संरचनात्मक और रचनात्मक कदम आगे बढ़ाते हैं। आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर रघुपति सिंघानिया जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जेके टायर्स। डॉक्टर रघुपति सिंघानिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन श्री जावेदकर जी, श्री मेघवाल जी, श्री दत्ती गांव जी, श्री गोयल जी, डॉक्टर गोयनका जी, श्री करुणा पटनायक जी, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to be a part of the turning point in automotive testing journey of our country, the inauguration of this high-speed track of NATRAX. I had the pleasure of being a part of the advisory group during the formative days of NATRAX. Such a high-speed track was always considered critically essential as part of this project. It therefore gives me immense pleasure to see this becoming a reality, a much-needed facility in our country. I really recollect a thrilling experience when I had an opportunity of driving on such a high-speed track in Germany. And then I dreamt of such a facility in India, which has now become a reality. With this high-speed track, NATRAX facilities now have complete area of world-class testing infrastructure right here in India. Indeed, a stepping stone in the journey of Atmanirbhar Bharat. As is well known, tires play a key role in vehicle performance. It is therefore important, as this high-speed track will provide a suitable testing and proving grounds for the tires being produced by the Indian tire companies to fulfill the needs of high fuel efficiency
low rolling resistance and safety features. Incidentally, such high-speed tracks for tires so far were being conducted by sending our tires abroad to European countries. Therefore, I am particularly happy that now it will be possible to conduct these right here in India. This will also help the Indian industry in expanding development of high-quality products that the tire industry is fully capable of. I see a huge potential not only in testing and development of automotive components, as it can also cater to the widest category of tires and vehicles, from two-wheelers to all kinds of heavy vehicles. Another opportunity we see is running racing events, which are in fact incubation grounds for new technologies in automotive industry as well as in tire industry. We have been partnering and jointly working with Netflix and other organizations with such initiatives to further the mission of self-reliance in these areas to reduce dependence on tire imports and also making India a global export hub. Addition of such facilities will surely act as catalyst to our efforts going forward. I see a huge potential for Netflix to play a leading role in supporting the tire industry for validation and development of high-performance, eco-friendly technology in tires as well as automotive components. I might mention, honorable gentlemen present here, that Indian tire industry produces all kinds of tires, right from the huge, large earth mover tires to very light 2-kilo two-wheeler tires and scooters, and has complete technology in sync with world-level technologies. Perhaps only aero tires and some defense specialized tires still need to be imported. Otherwise, the entire gambit of tire application is available and supplied by the Indian tire industry. As part of our R&D efforts, we are committed at JK Tyres to work further with Netflix in developing infrastructure for tire testing and work towards making Netflix a one-stop solution for all tire testing and validation needs of industry for safe, green, and high-performance tires. In fact, we have already signed an MOU in this regard. We are actively working with Netflix team for tire testing infrastructure for noise, dry, and wet braking. This facility will definitely be a star attraction for the players in automotive fraternity and will help to garner revenue for the government. This oval high-speed test track indeed is jewel in the crown, quite literally. I am sure that high-speed track will open a plethora of new scopes for development of the automobile community, which has otherwise hindered due to high costs for time and testing abroad. My sincere appreciation and heartfelt thanks to Government of India, Government of Madhya Pradesh, Team Netflix and DHI for their efforts in completing this facility successfully and developing this world-class facility for the automotive industry. I wish the Netflix team all the very best. Jai Hind. Thank you. आपके अनुभव धन्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें आज के विशिष्ट अतिथि श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इनकी ओर से भी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ कारणों से आज वो अभी यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे हमें सभा को उद्बोधित करें। धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण नाम। ये नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को जब उन्होंने अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था कि हम आजादी का अमृत महोत्सव आज से मनाना शुरू कर रहे हैं 12 मार्च 2021 से। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी घोषणा की थी
कि ये आजादी का अमृत महोत्सव 75 वीक तक मना जाएगा। हर वीक में कुछ न कुछ होगा। तो आज मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाह रहा हूं हमारे मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर साहब का, जो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज में तो मंत्री हैं ही, साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एनवायरमेंट में भी, क्लाइमेट चेंज में भी मंत्री हैं। और इन्होंने ये बीड़ा हाथ में लिया कि आजादी के अमृत महोत्सव में हैवी इंडस्ट्री के माध्यम से भी कोई अमृत बरसाया जा सकता है क्या। और आज ये अमृत बरस रहा है। इंदौर वो जगह है जो इस समय संसार में फेमस हो रही है। ये नेट्रेक्स का परिसर है जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये इंदौर के पास ही है और इसको नेट्रेक्स इंदौर ही कहते हैं। लेकिन इंदौर पूरे संसार में फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, महत्वपूर्ण स्थान उसने प्राप्त किया है। उसका एक कारण है कि स्वच्छता के रैंकिंग में लगातार कई सालों से इंदौर पहला स्थान प्राप्त करता आ रहा है और उसमें जो व्हीकल है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं बधाई देता हूं नेट्रेक्स के हमारे जो डीएन कुरियप्पा साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर और सेंटर हेड है नेट्रेक्स से, उनको और उनकी टीम को, हमारे जो सेक्रेटरी हैं अरुण गोयल साहब उनको, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन गोयनका जी और रघुपति सिंघानिया जी उनको, और हमारे मंत्री जी जो हमें मार्गदर्शन लगातार देते रहे हैं। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा जो ये अमृत बरसाया जा रहा है, ये वाकई एक अमृत है जी, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे पवन गोयनका जी कि अब हमारे व्हीकल को बाहर नहीं जाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। ये हाई स्पीड ट्रैक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी जुड़ रही है नेट्रेक्स इंदौर में। और अगर एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो व्हीकल हैं उनको टेस्टिंग के लिए जब बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो उनको लगेगा हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संदेश है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बने। अब जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें ऐसे जो माइलस्टोन है ये हमें बहुत ताजा ताकत देते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो एक घोष वाक्य है कि आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाया जाए, जब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, ये हम 15 अगस्त 2022 को मनाएंगे, तब तक सबके पास मकान हो, सबके पास गैस हो, सबके घरों में पानी हो टूटी से उनके घर में ही, उसके पास बिजली हो, रोजगार के अवसर हो, तो उस समय जितने भी व्हीकल हैं उनके टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया में ही उपलब्ध क्यों नहीं हो। ये भी एक आजादी के अमृत महोत्सव का पार्ट है, इनपुट है जो आज पूरा कर रहे हैं आप। मैं 17 दिसंबर 2020 को आपके यहाँ आया था, आपको कई लोगों ने मुझे ये हाई स्पीड ट्रैक दिखाया था। अभी गोयनका जी कह रहे थे कि 2005 में सेंटर शुरू हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं देखने गया था अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नेट्रेक्स में 2014 के बाद जब मोदी जी आए उसके बाद से ही तेजी से आगे बढ़ा है। और ये भी आज का जो प्रकल्प है ये भी ये सिद्ध करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि हम बाहर क्यों जाएं। जब हमारे देश में कोई चीज उपलब्ध हो तो हम बाहर क्यों जाएं। इसलिए आज का ये जो हाई स्पीड ट्रैक है निश्चित रूप से ये ऑटो सेक्टर में माइलस्टोन सिद्ध होगा। यही शुभकामना देता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमृत की कुछ बूंदें यहाँ माँ अहिल्या नगरी इंदौर के नेट्रेक्स इंदौर के प्रांगण में आई हैं और आज का ये दिन हम सब मिलकर देख रहे हैं, मना रहे हैं। आज के इस अवसर पर शुभकामना संदेश देने के लिए, शुभारंभ संदेश देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट,
Forest and Climate Change, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. आदरणीय सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ शुभकामना संदेश देने हेतु। सबको आज के इस कार्यक्रम की पूरी बधाई। आज मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी, दोनों उद्योग रत्न एक तरह से, सिंघानिया जी और पवन गोयनका जी, हमारे सचिव अरुण गोयल जी और उनकी टीम, और मूल नेटवर्क जिन्होंने तैयार किया और शुरू भी किया। जिन व्हीकल के बैच को मैंने शुभारंभ के तरीके से शुरू किया, मुझे यकीन है उनकी आधी टेस्टें तो पूरी भी हो गई होगी। दिस इज इंडियाज अचीवमेंट। दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दिस इज a declaration of political will that yes, India will not be only an important automobile center, but it will become the hub of automobile and not only of components. So this is, ये दुनिया का एक मुख्य ऑटोमोबाइल का केंद्र बनेगा, उत्पादन का भी, सेवाओं का भी और स्पेयर पार्ट्स का भी। ये तीनों काम हम आने वाले दिनों में करेंगे और जो सपना है भारत का, ज्यादा रोजगार पैदा करे, ज्यादा टैक्स कलेक्शन भी इससे हो, और भारत की बड़ी गाड़ियां दुनिया की सभी सड़कों पर चले। This is India's dream of Atmanirbhar Bharat. This is India's, as rightly said by my colleague, a gift on Azadi Ka Amrit Mahotsav. Matrix, the film has depicted the utilities the complex has created, and the utilities for which our vehicles we need to send earlier in the foreign countries, now it will be reversing. Now many foreign countries, those who don't have these kind of facilities, will now send their vehicles here instead of sending to Europe, America, because we have a track which is 5th largest in the world, but largest in Asia, even more equipped than China and Japan. So this is a quality work completed in last 6 years. ये भारत की एक उपलब्धि है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के तरक्की का जो सपना देखा है, वो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। और जब हम सत्ता में आए थे तो 2 मोबाइल फैक्ट्रीज थी, आज लगभग 200 फैक्ट्रीज हो रही है। ऐसे ही व्हीकल के निर्माण में भी नई नई लागत आएगी और उससे रोजगार के अवसर और बहुत बढ़ेंगे। एक अच्छा विषय गोयनका जी ने प्रस्तुत किया, एक विषय रखा कि scene is changing so fast that we must rethink actually annually, and therefore we will arrange a stakeholder dialogue very soon
to think about both the topics. A, what is the further acceleration for high growth of automobile industry? And two, what is the way forward for fast tracking and fast growth of e-vehicles? There are many ideas floating around. The cost-conscious nation always starts slow because there is a upfront cost disadvantage in e-vehicles. But there are newer solutions coming up. So we'll hold stakeholder consultation in both the areas very soon. और मैं तो इतना कहूंगा कि आज का जो बना है और पुणे में, मानेसर में, चेन्नई में जो अपग्रेडेशन हुआ है फैसिलिटीज का, तो पुणे में मैंने पहले ARAI का ट्रैक देखा था, अब रांजनगांव में जिस तरह से बढ़ गया है और अच्छा बना है वो भी अच्छा है. तो ये फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक फैसिलिटीज है. And as we grow, we must provide complete solution. This NATRAX is providing the complete solution for one aspect of vehicle movement. And therefore, I am very happy to note that NATRAX has now become center of excellence in vehicle dynamics. This is very important. HST is used for measuring maximum speed capability of high-end cars. And this track can be used for racing also. That's a good news. So, we are really very happy today for this achievement. So as I said, this is India's new vision of growth. This is India's Make in India initiative. This is our way forward in direction of Atmanirbhar Bharat. And this is how particularly this government works under leadership of Modi ji, where many projects which were languishing for years together are now getting completed. He takes 15 projects every month for review in Pragati meeting with concerned officials of central and state government to find out what has stopped, what is the reason for lagging behind of implementation of the project. And there the decisions are taken. So these projects, and there are many, I can list n number of projects which were speeded up. Long pending infrastructure projects in the railway, highway, airports, and now these testing facilities and automobile initiatives, and e-vehicles also will pick up. So we will become $5 trillion economy. Due to COVID, the world has suffered, but we are overcoming, and I welcome yesterday's initiatives and the new relief package given to the industrial sectors which has suffered a lot during the pandemic. So
this is the way forward for India, and we will complete the targets in automobile, component manufacturing, vehicle manufacturing, and also e-vehicles. That's our way forward, and I am very sure that we will achieve our dream by 2030. Thank you and all the best. बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके मार्गदर्शन से, आपकी दूरदर्शिता से और दृढ़ संकल्प से हम नित नए सोपानों को गढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई भी कार्य सभी के सहयोग से, वरिष्ठों के मार्गदर्शन से संपन्न होता है और कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण दायित्व। इस दायित्व के निर्वहन के लिए मैं अब आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर एन करुपैया जी को, एडिशनल डायरेक्टर एंड सेंटर है नैट्रेक्स इंदौर। Distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, good afternoon. It's my pleasure and privilege to pay vote of thanks on successful completion of this prestigious high-speed track project of Government of India. We are indeed blessed to have the august presence of two honorable ministers, Honorable Secretary DHI, and two captains of the Indian automobile industry among us for this function today. At the outset, I would like to thank our chief guest, Honorable Minister Shri Prakash Javadekar ji, for his inspiring speech. Next, I would like to thank Honorable Minister of State Shri Arjun Ram Meghwal ji for his supporting and thought-provoking speech. I would like to thank our Honorable Secretary Shri Arun Goyal ji for his warm welcome address and detailed opening remarks. I would also like to thank Dr. Raghupati Singhania and Dr. Pawan Goenka for sharing the industry perspective and gracing the occasion. I'll be failing in my duties if I do not acknowledge the contribution of our small team from NATRAX, NATRIP, Madhya Pradesh government and Department of Heavy Industries to make this project and the function a success. Last but not the least, I would also like to thank all others who have contributed for the successful completion of this project and this function. Thank you all. इस कार्यक्रम की पूर्णता में, आजादी के अमृत महोत्सव में, मां भारती के चरणों में मैं श्रीमती मंजूषा राजेश जौहरी ये पंक्तियां अर्पित करती हूँ। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो। ये देश है स्वतंत्र, मेदिनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र, चांदनी स्वतंत्र है। लेकर अनंत शक्तियां सदा समृद्धि की तुम कामना करो, तुम कामना करो। इसी कामना के साथ कि हम भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश की समृद्धि में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान संपूर्ण करेंगे। आज उपस्थित सभी महानुभावों का सादर धन्यवाद। इति शुभम।